Hi, listeners. Thanks for joining in. We'll just start in a moment. Hi, this is Yeah. Hi, Kirubakaran, sir. Hey, hi. Hi everyone. Uh, Yeah. Thanks all for right. inviting. So, awesome, awesome. Thank you so much, both of you, sirs, for joining us tonight. And आज का मार्केट भी बहुत मजेदार था. पिछले कुछ दिनों से मार्केट ऐसा चल रहा है कि मतलब कुछ अलग ही हो रहा है मार्केट में. एटलीस्ट मेरे लिए कुछ अलग ही हो रहा है, विच आई एम एक्सपीरियंसिंग. मतलब जो मैंने मेरे टाइम में मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है. एंड मतलब जून पूरा का पूरा ही ऐसा गया है कि मतलब अलग ही सीन बना है पूरे में. सो अभी भी मार्केट्स ऐसी सिचुएशन है. एंड आई थिंक राइट नाउ द मार्केट सिचुएशन इज सच कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स आर वेरी मच डिवाइडेड ऑन कि क्या होने वाला है. सम आर बुलिश, सम आर बेयरिश, सम आर सेइंग कि इट्स रेंज बाउंड. हर तरफ मतलब कुछ अलग ही चल रहा है. सो वी हैव ऑफ कोर्स विद अस आदित्य सर, स्टॉक विजार्ड सर एंड किरुबाकरन सर. दोनों से ही हम लोग आज मार्केट की बात करेंगे, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या लगता है, उनकी एनालिसिस क्या कहती है, क्या होने वाला है. And then we'll also try to understand ki what has been their strategy in this volatile market, and what is their strategy going to be going forward from here. So बिल्कुल शुरू करते. स्टॉक विजार्ड सर ऑफ कोर्स पहले भी हमारे साथ आ चुके हैं, हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है. किरुबाकरन सर पहली बार हमारे साथ आए हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू हिम एंड लर्न लॉट फ्रॉम हिम. सो शुरू करते हैं. हाउ अबाउट किरुबाकरन सर, आपसे जानना चाहूंगा व्हाट इज योर एनालिसिस एंड क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, एंड हाउ आर यू डीलिंग विद इट राइट नाउ सर. Yeah, thank you so much. First of all, I just wanted to thank for people to join at this time. Basically, I usually sleep at 9 o'clock, and this is the first time I'm joining a session at a late time. But no, I'll just keep it short. The first thing is, I've been in the market since 2008, and it's been almost 13 years. And no, one thing that I really believe in is nobody could predict what could happen in next couple of months or couple of weeks or even couple of years. Like nobody predicted that there could be a corona crash that would have happened, because everybody thought that the market could correct, but nobody would have thought that there could be a pandemic which could come in that could end up with complete lockdown across the world. So it is really waste of time predicting where the market would go. So, and also I have tried multiple analysis with respect to be it SIP or be it long term investing. So one thing that I firmly believe in is when I'm trying to invest, I keep investing and trading separately. And with respect to trading, I am completely a rule-based trader. I don't follow any specific news or know any macroeconomic structures. So I build my own rules, based on the historical data. So I analyze the historical data, and based on that, I create my own rules. Whenever the rule says buy, I just buy it. Whenever it says sell, I just sell it. So when I have my own predefined rules, it is much easier to be a disciplined trader, because when you follow news and when you trade completely based on what is happening around the world based on multiple global events, then you tend to keep changing your decisions from buy to sell, from sell to buy. But when you have your own rules completely based on historical data, that really helps. And with respect to investing, what I have done is, like, I tried doing multiple research on what would be the best stocks to invest on the long term. And after multiple analysis, what I've concluded is it is really, really difficult to beat the overall index on the long run consistently. Even for an example, Warren Buffett, everybody knows about Warren Buffett, and he was able to make more than 22% CAGR for for many decades. But even if you observe Warren Buffett, he was underperforming the index for more than 15, 20 years during the bull run period. Especially if you check those dot-com bubble period, people like the greatest investor of all time, Warren Buffett himself, was not participated in any of the internet stocks, and he was underperforming for multiple years. So that will happen with respect to any kind of market structure. So there will be periods of ups and downs, and there will be periods of no complete volatility like what we are currently facing. But what he did is he completely stayed to whatever his own principles. Like if he's a value investor, he always buys stocks. So it is all about not about which stock you are buying. It's all about when you are buying it. So that decides whether you're going to hold that stock or not. So for an example, people who have invested in IT stocks. Now IT stocks have rallied tremendously in the last couple of years after COVID, but now it has corrected significantly.
So people know did so much of analysis. They would have bought Wipro, they would have bought Infosys. All these companies are good, but when they are buying it, decides whether they are going to hold it for quite a long time or not. So that is why I stick my long-term investing only with respect to index. So when you are making an index investment, the first thing is we always compare our portfolio with respect to index. So say suppose if our portfolio is down 20%, and if the index is down 30%, we'll be still happy because our portfolio is only down 20%, wherever the overall market itself was down more than your portfolio of 30%. So you keep comparing. If the market is moving up, and if say suppose if Nifty has made 80% returns, and if your portfolio has given only 30% returns, you will not be happy even though you made a positive returns, because we always keep comparing our portfolio with respect to index returns. But when you are investing directly in index itself, the best thing is you don't have any other index to have a benchmark to compare. And the moment the index goes down, your portfolio goes down, since you are also investing in index. If the index moves up, obviously your no portfolio would move up. So there is a statistics that has been published in the US newspaper journal that more than 85% of the fund managers were not able to beat the index on the long run. So we have only 15% chance. Like, you should be very sure that whatever the funds that you're investing, or whomever the fund manager that you're betting in, must be able to beat the index on the long run. But statistically, that is really, really difficult. But when you're sticking to index fund, obviously that is going to generate in a higher returns. And second thing is, when you're doing a long term investing, the most important part is, say suppose someone is doing an SIP. What they would have observed is, they always assume that if the market corrects, say whatever, in my case what happens is, whenever I make an SIP investment on a monthly basis, in next couple of weeks, it tends to go down. The market tends to go down. Then I thought, okay, probably I would have, if I'd have waited for a few more weeks or days, I would have bought this SIP at a lower cost. But these kind of analysis, we keep on doing it and trying to time the markets. But no, I have tried doing a complete data analysis on last 16 years of Nifty data on two different scenarios. First scenario is checking how my SIP would have performed if I have bought the index only during the downtrend, versus how my SIP would have performed if I did this only during the uptrend. I did this analysis, and now I could see that investing a regular SIP whenever there is a downtrend in the markets, that has given higher returns. Yes, definitely. But when I compare that with the normal regular investing of no matter what happens in the market, if you just keep investing every single month on the same day for last 16 years, that would have given you the highest returns compared to any kind of analysis. So that is what I wanted to convey. Like, no matter what kind of analysis you do, market tends to move up in the long run always. There would be short term volatility, but on the long run, definitely it moves up, because obviously the economy has to do well. And since markets like India and emerging markets, our average age or population age is 29 years, so they are working professionals. So in the next 10 years or 15 years, obviously this is going to grow multifold, and that in turn would reflect in the growth in economy. Obviously that is going to reflect in stock markets. So my advice is, do not focus too much on what is happening currently in the markets if you're a long-term investor. And also do not have so much of concentrated portfolio, like just betting on one shares or two shares. That would be really risky part. Just have a diversified portfolio or invest in index funds and continue that for for a longer period of time. That would help you to overcome this volatility and make higher returns on the long run. So that is my advice with respect to investing. With respect to trading, you need to have your own rules. Do not be a news-based trader. Better be a rule-based trader, so that you have a positive edge to make higher returns on the long run. So that is absolutely beautifully put. And it was, I mean, your analysis, it's an absolute gem, I would say. And I have so many questions that I want to ask you right now, and I'll definitely get back to you in just a moment. And I would also love to have a take from Stock Wizards, Aditya sir. Can I also have your take on what's happening right now, and what do you think is going to happen, and how are you dealing with it? And then we'll take up some follow up questions. Also, for our audience as well, I have pinned a tweet on the spaces. If you have any questions for either of our panel guests, panelists tonight, please do put them in the comments of that tweet. Aditya sir, can I have your view on what is happening in the market right now, sir? Please. Yes, sir. Thanks for inviting me. Hello, everyone. The thing is, exactly, no one can actually predict
कि अभी होने क्या वाला है. But what looks like currently market is in consolidation mode. The market is trying to form its base. Like earlier also we said, I think past 3 से 4 महीने पहले ही मैंने बोला था कि the level of 15,500 is very crucial for the market. And even since for the past few months, we have seen that earlier the market tried to form the base near 15,800, and recently इसने 15,500 फिर 15,200 के आसपास का बेस बनाया है. तो things are looking पहले if you compare the like earlier scenario के bond yields were rising, dollar index was rising, the whole world market was on a correction spree. So things are usually looking much better than what it looked few months back. और मैं नैस्डैक और डाउ की बात करें तो वो भी काफी एक क्रिटिकल सपोर्ट से उन्होंने बाउंस बैक दिया है. आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल्स फर्स्ट. सो जो जितना बुरा लग रहा था 2-3 महीने पहले पूरा सिनेरियो, वो अभी थोड़ा बेटर दिख रहा है. और जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो भी थोड़े क्या बहुत ज्यादा वो एक होपफुली तो चीजें थोड़ी बेटर लग रही हैं. और अभी बेस भी मार्केट कोशिश कर रहा है बनाने का. इट इज सेम मोर और लेस 15,200 15,500 का ही अभी बेस बना रहा है मार्केट. और लेट्स सी, थिंग्स आर डेफिनेटली द थिंग्स आर लुकिंग अ बिट पॉजिटिव. थोड़ी चीजें बेटर दिख रही हैं क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स भी थोड़े कूल ऑफ हो रहे हैं. Or it's been what I remember, the correction started since last August, so it's been almost 10 or 11 months since we are in this period. ATH निफ्टी का आई गेस अक्टूबर में लगा था और फिर सितंबर अगस्त में मिड स्मॉल कैप्स का करेक्शन चालू हुआ था. तो ये पूरा फेज जो है ये लगभग लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, जुलाई लास्ट अगस्त फर्स्ट वीक में. तो मुझे लगता है कि ये एक जो वर्स्ट पीरियड था वो हम लोगों ने काफी जो बुरा पीरियड है वो निकल चुका है. थिंग्स आर डेफिनेटली लुक्स अ बिट पॉजिटिव. और ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही 100% श्योर है कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा. बट एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी बन रही है ऐसी. कुछ चीजें डेफिनेटली कुछ चीजें अच्छी दिख रही हैं. और रही बात बाकी फैक्टर्स की, तो इफ यू सी यस्टरडे एक डेटा आया था कल के, जो वॉल्यूम्स हैं एनएसई पे वो लगभग लगभग हाफ हो गए हैं. तो इसका मतलब हुआ लगभग के मेजोरिटी ऑफ जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं वो लगभग लगभग काफी रिड्यूस हो चुके हैं. तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज हु हैव सर्वाइव पास्ट 10-11 मंथ्स, जिन्होंने मार्केट में सर्वाइव किया है. मुझे लगता है कि 30 या 40% डीमेट अकाउंट तो क्लोज हो गए होंगे जिस हिसाब से मार्केट जा रहा है. और ट्विटर पे भी दे आर द फेजेस, कुछ फेजेस होते हैं जब बुल मार्केट में यू हैव बम्पर, like you have more likes, retweets, you are gaining followers, everything goes perfectly all right. but अभी क्या हो रहा है कि it's very rare to चीजें काफी स्लो डाउन हो चुकी हैं क्योंकि जो लोग बुल मार्केट में एंटर हुए थे वो अभी काफी उसमें से गायब हो चुके हैं. तो अभी का जो फेज है कि मार्केट में टिकता वही है जिसके पास अ, एक साइकोलॉजिक लेवल एक ढंग की होती है. और जो उस चीज को, जैसे मेरी पोर्टफोलियो 30-35% डाउन हुई है, तो डेफिनेटली जिसका रिस्क एपेटाइट होगा झेलने का वो तो टिका होगा. बट जिनका जो लोगों ने पोजीशन साइजिंग फॉलो नहीं की होगी, दे वुड हैव डेफिनेटली उनकी सिचुएशन काफी, यू कैन एक्सपेक्ट कि क्या हुई होगी. तो चीजें काफी बुरी रही पिछले 9-10 महीनों में और चीजें थोड़ी बेटर दिख रही हैं. कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स डेफिनेटली पॉजिटिव दिख रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं भी. और इवन आई ट्वीट भी किया था मैंने 2-3 हफ्ते पहले के वर्ल्ड मार्केट में भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी स्टेबिलिटी डेफिनेटली दिख रही है. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं. और आई गेस ये जो फेड वगैरह के हाइक वगैरह हैं, ये इफ यू नो के थोड़ा बहुत अगर आपको पता होगा कि मार्केट एक न्यूज पे बार बार रिएक्ट नहीं करती है. तो फेड वाले पे ऑलरेडी अपने को 2-3 बार मार्केट ने रिएक्ट कर चुका है. बार बार फेड आता है, हाइक करता है. इवन इंडिया में भी आरबीआई रेपो रेट वगैरह इंक्रीज कर रहा है. तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में फैक्टर आउट कर चुकी हैं. और जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं
जितनी DIIs की सेलिंग हुई है, आई गेस 2008 में जितनी सेलिंग करी थी FIIs ने, उतनी उससे 3 times ज्यादा सेलिंग पिछले 9 महीने में हुई है. बट स्टिल आवर मार्केट हैज showed a lot of resilience due to DIIs and retail participation. तो kudos to them के market has very bravely survived the FII selling. काफी हद तक उन्होंने चीजों को संभाला है, और अब मुझे लगता है कि चीजें इंप्रूव होनी चाहिए. थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट दिख भी रही है, और देखते हैं क्या होता है. बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक जो टिके हुए हैं, मैं कहता हूँ मार्केट में खूंटा गाड़ के टिकना पड़ता है. तो जो खूंटा गाड़ के टिका हुआ है मार्केट में, उसको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा. और अभी का जो ये जो फेज है, इसके ओवर होने के बाद मुझे नहीं लगता कि 2-3 साल तक बियर मार्केट अपने को दिखेगी भी. तो लेट्स होप सो कि चीजें इंप्रूव हो जाएं. हाँ, जुलाई लास्ट अगस्त में मुझे लगता है कि मार्केट विल डेफिनेटली फिर से वापस मोमेंटम जाएगा. अभी कुछ रेसिस्टेंस है अभी, अगर टेक्निकली देखें तो 17,000 भी है, 17,500 भी है. बट मोमेंटम हमें जो फोकस है, हमें वो इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक करना चाहिए. इवन पिछले 2-3 हफ्तों में भी मैंने कुछ स्टॉक्स वगैरह शेयर भी किए थे ट्विटर पे, जो कि मोमेंटम शो कर रहे हैं. तो इंडेक्स पे ध्यान देने से ज्यादा बेटर है कि अपन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे फोकस करें, जो कि ऐसे मार्केट में भी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं. और उन पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा. और ये मार्केट है, ये आप सोचोगे कि आपके अकॉर्डिंग चलेगा तो वो पॉसिबल नहीं है. बट उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा. तो ये चीजें बस थोड़ा ध्यान में रखना है, और बाकी देखते हैं. Absolutely, sir. Thank you so much for that. That was brilliantly put. इसमें सर, of course you said some brilliant things. I think I also agree. जो volumes हैं और जो tweets हैं, जो हमारे listeners हैं पॉड्स के, so जून काफी हद तक एक जानलेवा जून था मेरे को लगता है. But yeah, so whoever sticks now, I mean, stock market is all about कि वही खूटा गाड़ के बैठो, and then this is the when everybody is panicking, that's the time to be greedy, like Peter Lynch has also said. But absolutely, मार्केट में जब another, करेक्शन yes sir. मार्केट में जब करेक्शन होता है ना, तो everyone when the majority of traders and investors बोलते हैं कि buy the dip, but when the dip really comes, then hardly anyone buys. तो जब बुफे लगा होता है, जो डिस्काउंट ऑफर Exactly. चलता है, तो वो लोग डर के बेचते हैं. तो बस थोड़ा सा Right. ये जो गेम है, ये सारा माइंड गेम है. अगर आप उस चीज को समझोगे तो वो आपको डेफिनेटली इट विल बी एडवांटेज टू एवरीवन. तो वही है कि अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, अभी सेल लगी हुई है, जितना आप बटोर सकते हो. और ये आपका जो आप अभी जो बाय करोगे, जो भी आप शेयर परचेज करोगे, डेट वोंट बी. अभी आप जैसे जाते हो शॉपिंग मॉल में, जाते हो सेल में, जाते हो और आपको दिखता है डिस्काउंट ऑफर, आप परचेज करते हो, बट दे आर नॉट योर एसेट्स. अगर आप स्टॉक मार्केट में जब सेल लगती है, जब करेक्शन मोड चलता है, एंड यू बाय द स्टॉक्स, देन यू आर परचेसिंग एन एसेट. वो आपका एसेट होता है. फॉर डेफिनेटली फॉर लॉन्ग टर्म डेट विल बी, कुछ लोग कहते भी हैं कि ट्रीट इक्विटी एज योर सेकंड चाइल्ड. कि जितना लंबा खेलोगे, जितना इन्वेस्ट करोगे, और ये जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है. जिन लोगों ने पिछले 1 साल में अपनी SIP चालू कर रखी है, जिन्होंने 1 साल में डिप बाई किया हुआ है, इफ दे आर कैपेबल इनफ, उनको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा 4-5 साल बाद, 10 साल बाद. ये गेम, सारा का सारा गेम माइंड सेट का है. तो इस चीज को थोड़ा फोकस में रखना पड़ता है. करेक्शन से डरने का नहीं, इसका फायदा उठाने का. थोड़ा थोड़ा सा माइंडसेट सही करो और इसका फायदा उठाओ. Stocks have been down 60, 70, 80%. Absolutely. Even good, strong fundamental stocks are down 50%, 60%. It's a bumper discount. Sale लगी है यार, लूट लो. वो कुछ नहीं के डरने का है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा. 60-70% स्टॉक्स, कोई फंडामेंटली अच्छा स्टॉक अगर आपको 60%, 70% डिस्काउंट में मिल रहा है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. इंडियाज बुल स्टोरी, अगर लोग कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन इंडियाज बुल स्टोरी, इंडियाज लॉन्ग टर्म स्टोरी, देन ये आपका व्यू है. बट आई थिंक द इंडिया इज गोना रूल दिस डेकेड, next 5 years, 10 years. The opportunity which is rising right now, this is the best time for you to invest in India.
This is my view. Absolutely brilliantly put, sir. Brilliantly. Yeah. Okay, so that is absolutely the thing. I also think so, and in fact, we also had a space like a panel 2 days back also, and that there also I think the conclusion kind of was while almost all the panelists said that like all of them had different views. Like one was bearish, one of them was bullish, and then one said that we should watch and I'll wait for more data to decide. But the thing was ki everybody was ki be stock specific and stock selection is important. So that is the point that I would kind of want to take next. Kirubakaran sir, if I may, so you already said ki, like, if you are trading, just go by the rule that you have and create your own rules. But talking a little bit about investing, what do you think should do you have any favorite process that you go by, or can you give us any suggestions? I would love to know from your end. How should one go about it, and that too considering the current about investing also, you kind of suggested that a monthly fixed time blind, just put your money in that piggy bank, has as statistically that has proven to be better. But even in doing that, how should one go about selecting the stock that they are putting their money into? Kirubak, say you're on mute. Yeah, I'm sorry. See, with respect to the stocks, there are multiple stocks. See, if the stocks, no, the number of stocks which has gone down significantly has increased in the last few months. But it would be really, difficult. Say, suppose overall markets is moving up, but if there is only two or three stocks which has gone down, then you have an option to choose whether to invest in this stock or the other stock. But out of 2,500 listed stocks, if more than 50-60% of the stocks are already available at 60 or 70% discount or 80% crash, first thing that we can observe is there are two or three things that we can apply. Say if there are 100 stocks, in this 100 stocks, say some 20 stocks has gone down more than 80%. So most of the people, what they would do is, okay, this stock has corrected the most, so let me buy it. For an example, if Paytm has corrected significantly, or if Zomato has corrected significantly, then they see that these stocks are available at an attractive price, because they would think, okay, internet-based stocks would rule the future. But if you check the history, for an example, during the dot-com bubble burst, including Amazon, Microsoft, and all other IT companies, has significantly corrected more than 90%. And if you look back and see now, okay, Amazon has generated so much of wealth. But along with Amazon, there were multiple companies which has completely gone bankrupt, like companies like pets.com and multiple internet-based stocks completely gone bankrupt. So we cannot directly bet on stocks which has gone down significantly. So one approach we can follow is find out now. Say suppose if index is corrected 30%. So in this, find out which are the list of stocks which has outperformed the index. So instead of buying the stocks which has gone down significantly, find out the list of stocks which has outperformed. Instead of 30% compared to index downfall, if a stock is down, went down only 10% or just 5%, it means that even during such a downfall, these stocks haven't corrected much, which means that they are fundamentally strong and they could bounce back much faster and much higher once the market resumes. So we need to ignore all the weak stocks and look for stocks which are not losing so much and also able to outperform the index significantly. So I would always prefer these kind of stocks than the weaker stocks. The weaker stocks could give you cheaper option, but there are n number of weaker stocks. There are n number of stocks which are really cheap. It is really difficult to pick the best one from that. But if you're really going for the strong one, which is not corrected significantly, then that is available at an attractive price than the other one which is corrected so much. So that is the approach that I would say. So find out, you can use company, you can use platform like screener.com or any other screening platform. Go there and look for companies which has gone down more than 20% or 30% in the last 6 months or to 1 year, and sort it based on ascending order and see which one has corrected not much higher but lesser than index. So if index corrected 30%, look for stocks which is corrected for 20% or 15%, and also include rules like market capitalization higher than 5,000 crores or 10,000 crores, so that you avoid all junk stocks. Then you find out list of sectors that you would really interested in, and then you pick those stocks. And if you invest in that, if you follow this approach, this has a better margin of safety than blindly investing on a cheaper stock.
Absolutely. Brilliant, sir. Thank you so much for sharing that with us. I think I did read an article by Nitin Kamath sir also. He was also of the same opinion, and I absolutely love that article then. And this is absolutely brilliant even now. And I am personally, I also ardently believe that strong companies would be a who has not fallen when the market comes back, when the index comes back, they might shoot up to great heights. Thank you so much for sharing that, sir. मार्केट तो अब अभी ऐसा ही है बट इसमें स्टॉक विजार्ड सर आपका जादू कैसे चलता है विच स्टॉक्स डू यू प्रेफर गोइंग फॉर No, I don't have any stock specific recommendations as such. I, या so with my no, in my view, no, I don't have any no, stock specific recommendation as such. But if at all, no, there are a couple of companies that I would really love. One of them is no Apple. Apple is one company which is no really kind of a monopoly, which focuses completely on no mobile-based digital advertising. So they have a larger market share compared to no, any other listed entity. And also, Reliance, I do like Reliance, but I'm not sure whether this is the right price to invest in Reliance or not. But they being completely moving out from petroleum products to digital space, I think that should give larger ROA eventually after a couple of years. So these are the only two stocks which I've personally invested and I personally believe in. Other than that, most of my funds, SIPs, are being done in the index funds. Awesome. Thank you so much for sharing that, sir. And of course, as usual, this is not a buy or sell recommendation. Sir. Of course, our panelists here tonight, they're helping us understand and they're sharing their strategy so that we can learn and be someday hope to be as good as them. Right. Stock Wizard, sir, same question to you as well. What is your strategy? How do you go about selecting your stocks? And especially in this market, what would your suggestion be to our audiences? Aditya, sir. The thing, keep the thing simple. Look for the stocks who are showing strength. Look for the stocks who have posted superb quarters. Even the factors were not favorable for them. अभी मेजोरिटी ऑफ जो कंपनीज थे अभी लास्ट जो रिजल्ट सेशन आया था आप यू यू वुड हैव नोटेड के मेजोरिटी ऑफ कंपनीज का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया था क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उनके जो रिजल्ट वगैरह थे वो काफी इफेक्टेड हुए थे तो काफी अगर कंपेयर करोगे लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में तो लास्ट क्वार्टर में वी हैड अ वेरी काफी व्हाट यू कॉल के उतना अच्छा क्वार्टर नहीं गया था जो कंपनीज के रिजल्ट आए थे तो काफी गिने चुने कंपनीज थे जिन्होंने काफी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं और उनको आप को वॉच लिस्ट में डाल सकते हो आप देख सकते हो इनके अलावा रिसेंटली जो स्टॉक्स आपको मोमेंटम शो कर रहे हैं इतने वीक मार्केट में भी वी सी दैट few of the stocks are creating making ATH and they are making 52-week high so you can prefer those stocks but definitely you need to check the fundamental triggers as well if the company is given a good quarter the company is growing at a good pace for the past few years even the institutions are interested in the stock so these factors you need to consider if you are looking for stocks in this period तो आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी आपको टेक्निकल्स भी देखने पड़ेंगे एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आई ऑलवेज चेक टेक्निकल्स बट इफ यू लुक फॉर द इन्वेस्टमेंट एज वेल तो अपने को थोड़ा बहुत फंडामेंटल ट्रिगर्स भी देखने पड़ेंगे तो ये दो चार फैक्टर्स आप कंसिडर कर सकते हो और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आप देख सकते हो जो कि जिन्होंने पिछले डेकेड में या फिर 4-5 सालों में या पिछले 8-10 सालों से कंटिन्यूअस दे आर ऑन गुड ग्रोइंग स्प्री एंड स्टिल दे आर growing at a good pace even अगर आप सेफ खेलना चाहते हो if you want to play safe you can go for mid or large caps अगर if you are you have some good risk appetite you can go for small caps but there are a lot of opportunities which are available currently in the market you just need to filter out and definitely थोड़ा बहुत आपको skills चाहिए होंगे उनको find out करने के तो बस कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी बट अपॉर्चुनिटीज आर plenty of opportunities are available right now I won't go with I won't recommend names but you can all definitely check my handle as well I always try to share my view on stocks which looks good to me तो आप definitely देख सकते हो Right. Great, sir. Thank you so much for that. Sir, next question, which I want to ask both of you. Stock Wizard, sir, आपसे ही पहले शुरू करते हैं.
one of the very important things I believe you can call me Aditya as well. It doesn't sound good. okay. Yeah, it's much my real name. You can call me Aditya. all right. Yeah. All right, Aditya sir. तो आदित्य सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंट्री ठीक है, मतलब मिल जाती है, ट्विटर पे मिल जाती है, एनालिसिस करके मिल जाती है, स्क्रीनर्स पे मिल जाती है, एंड देयर आर सो मेनी गुड कंपनीज व्हेन दैट पीपल कैन एंटर. बट एग्जिट इज अ सिचुएशन विच आई पर्सनली बिलीव, मेरे को तो फॉर श्योर नहीं समझ में आया है एग्जिट स्ट्रेटेजी मेरा. एंड सो ऑफन इट हैपेंस दैट मैंने स्टॉक लिया, वो ऊपर भी गया बिकॉज एवरीथिंग वाज अलाइंड, बट आई डिड नॉट नो व्हेन टू एग्जिट, एंड देन वो सारे मेरा प्रॉफिट तो गया ही और फिर लाल भी हो गया वो स्टॉक. See, How would you the thing is, yeah. currently the kind of market we are having, we need to be we need to play very safe. अभी का market ऐसा है कि आप जैसे बुल मार्केट चलता है तो वो गधे घोड़े पे पैसे लगाओ तो वो जैकपॉट निकलता है. बट राइट नाउ द मार्केट इज नॉट उस टाइप का मार्केट नहीं चल रहा अभी. तो वी नीड टू डू, अभी क्या करना है कि अपने को काफी सेफली और काफी स्ट्रिक्टली फिल्टर्ड आउट करने के अपने को पिक स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द काइंड ऑफ मार्केट वी आर हैविंग दिस डेज, वी नीड टू हैव वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉक सिलेक्शन और कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज भी होने चाहिए. लाइक देयर आर hundreds of stocks which are giving ATH and they are breaking multi-year breakouts they are giving every day, but we need to filter out those stocks के जिनमें थोड़े बहुत फंडामेंटल ट्रिगर्स भी हो. और एंट्री डेफिनेटली आप बना सकते हो. एंट्री ब्रेकआउट सबको आता है कि एंट्री कहाँ लेनी है. एग्जिट के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं. लाइक एग्जिट के लिए आपका व्यू क्या है, आप शॉर्ट टर्म प्ले कर रहे हो, आप पोजिशनल प्ले कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्ले कर रहे हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है. मेनली वो मैटर करता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है. अगर आप 5-10-15% के लिए प्ले कर रहे हो तो आप रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट उतना ही रखोगे. अगर आप बड़े परसेंटेज के लिए प्ले कर रहे हो, अगर आपका टारगेट बड़ा है तो आप स्टॉप लॉस बड़ा रख सकते हो. और जनरली ये स्पेस पे मैं टेक्निकल ज्यादा समझा नहीं सकता, बट स्टॉप लॉस यू शुड ऑलवेज कीप ऑन योर रिस्क एपेटाइट. आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना लॉस दे सकते हो. और there are lot of criterias, there are lot of moving averages and super trend and there are lot of indicators. बट अभी के मार्केट में अगर आपको एग्जिट के बारे में सोचना है तो सबसे बड़ी चीज कि आप काफी लिमिटेड स्टॉक्स पिक करो. बुल मार्केट में आप एक टाइम पे आपकी होल्डिंग 8-10 स्टॉक्स हो सकती है, बट द काइंड ऑफ मार्केट अभी है जैसा मार्केट है, आप थोड़े लिमिटेड स्टॉक्स रखो, एंट्री लिमिटेड रखो, ताकि आप प्रॉपरली ट्रैक कर सको कि स्टॉक्स में चल क्या रहा है. एक टाइम में अगर आप 10-15 स्टॉक्स अगर आप पोजिशनल बेसिस पे एंटर करोगे तो आपको काफी दिक्कत होगी स्टॉप लॉस सेलेक्ट करने में. लेकिन अगर आप लिमिटेड स्टॉक्स रखोगे, और मार्केट अभी ऐसा है भी कि आपको लिमिटेड ही ट्रेड करना पड़ेगा. इफ यू सी, अगर मेरे को भी अगर आप देखोगे ट्विटर पे तो मैं हार्डली 1 या 2 दिन में एक स्टॉक देता हूँ. और देयर आर मेनी एनालिस्ट जो कि एक दिन में 3-4 स्टॉक्स बहुत आसानी से दे देते हैं. You think it is possible to trade 4 or 5 cash stocks or even FNO stocks in a single day? अगर कोई बहुत बड़ा ट्रेडर है तो वो कर सकता है, बट मेरे से वो नहीं होता. मेरे को जब तक कन्विक्शन नहीं आता, चाहे वो कैश हो या FNO हो, कोई भी स्टॉक हो, मैं ट्रेड नहीं कर सकता. तो अभी का जो मार्केट मैं पूरे दिन वेट करता हूँ, मेरे को जब तक कोई हाई कन्विक्शन सेटअप नहीं दिखता, कोई हाई कन्विक्शन टेक्नो फंडा कुछ नहीं दिखता मेरे को, तब तक मैं एंट्री नहीं करता हूँ. और कीप योर पोजीशंस लिमिटेड. एंड स्टॉप लॉस, बहुत से लोग पूछते हैं कि स्टॉप लॉस कितना रखूं. अगर आपको टेक्निकल्स पता है, if you know the technicals, you can easily find out how to keep the stop loss. यहाँ स्पेस पे मैं मेंशन शायद मुश्किल है बताना, but you can keep super trend support wave that works very well on different time frames. You can use EMA 21, EMA 63 you can use. अगर आपको और कुछ भी नहीं आता आपको, तो आप किसी भी स्टॉक का वीकली लो देख सकते हो कि जो एंट्री होती है किसी स्टॉक की ना, अगर आप वेंसडे ये ज्यादा फेवर करता है, अगर आप लेटर पार्ट ऑफ द वीक में एंट्री करते हो किसी भी स्टॉक का, जो वीक उस वीक का लो होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है.
आप एक वो आप रख सकते हो। बट अगर आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है तो, क्योंकि मैं जनरली एंट्री ऐसे स्टॉक में करता हूँ ना, अगर आप मुझसे पूछोगे मेरे फेवरेट स्टॉक्स, अगर आप मेरे पास चार ऑप्शन दोगे कि चार ऑप्शन दोगे एंटर करने को, तो मैं ऐसे स्टॉक चूज करूंगा ना जिसका स्टॉप लॉस छोटा हो, क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट फिर वो छोटा हो जाता है। अगर मैं ऐसा स्टॉक लूँ जिसमें ब्रेकआउट हुआ है और उसका स्टॉप लॉस 15% है, तो मैं वो स्टॉक नहीं लूंगा। मैं कोशिश करूंगा ऐसे स्टॉक लेने को जिसमें स्टॉप लॉस छोटा हो। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स चूज करो जिसमें स्टॉप लॉस छोटा हो, जिनमें जो सपोर्ट है, चाहे वो वीकली सपोर्ट है चाहे वो डेली सपोर्ट है, वो थोड़ा छोटा हो। तो क्या होता है ना कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो काफी छोटा हो जाता है। और जो स्टॉक आजकल के मार्केट में क्या है कि स्टॉक्स बहुत ज्यादा मूव नहीं देते। पहले के टाइम था कि स्टॉक्स एक दिन में एफएनओ में भी स्टॉक डबल सर्किट मारता था। अब हमने वो मार्केट भी देखा है जब एफएनओ में अपन 5-6% पे स्टॉक पिक किया और वो स्टॉक 10% फिर सर्किट तोड़ के 15-20% भी दिया है। बट आजकल के मार्केट में क्या चल रहा है कि 2-3-4% बस, उसके बाद उसकी हवा निकल जाती है, वापस नहीं चला आता है। तो मार्केट वैसा नहीं है, तो आप डेफिनेटली चूज करो ऐसा स्टॉक जो कि थोड़ा बहुत ज्यादा ऊपर, ज्यादा क्या कहते हैं उसको, ज्यादा मूव ना दिया उसने, उसमें कैपेबिलिटी हो कि तो आप उसमें एटलीस्ट कुछ जूस निकाल सकें। जो स्टॉक पहले ही एक दिन में 10-12% दे चुका है, आजकल के मार्केट में वीकली 20% भी कोई स्टॉक देता है तो बहुत है। और अगर आपको कोई इंट्राडे में स्टॉक 8-10% दे रखा है तो उसमें जूस बचा नहीं है। तो अपने को मेन जूस निकालना होता है। अपने को नहीं पता कि स्टॉक कितना बढ़ेगा और ब्रेकआउट देने के बाद कहाँ निकलेगा, ये अपने को नहीं पता होता है। अपने को केवल वो कहते हैं ना कि बस बीच का जो माल है वो खाना होता है। तो अपने को वही काम करना है कि बीच में घुसो और कोशिश करो कि अपना स्टॉप लॉस छोटा हो। जो सपोर्ट है उसका, जहाँ से वो बाउंस, जहाँ से मूव आना चालू हुआ है, वो आपको थोड़ा स्टॉप लॉस का ध्यान रखना होता है। तो ऐसे स्टॉक में सिलेक्शन करो कि बस स्टॉप लॉस छोटा हो। और तो रिस्क हमेशा अपने औकात अनुसार लेना चाहिए, कि अपने को पता होना चाहिए कि कितना कितना लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। In the kind of market we are having, we cannot expect a stock to give 20%, 30% in a week. अभी स्टॉक 4-5%, 10% दे जाए तो बहुत है। तो स्टॉप लॉस भी आप कोशिश करो कि 4-5-6% ही रहे। हाँ, बुल मार्केट में आप थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हो, कि बुल मार्केट में आपको टारगेट भी बड़े बड़े आते हैं। स्टॉक्स लगातार 2-2-3 दिन तक सर्किट पे रहता है। बट अभी वो मार्केट नहीं है, तो थोड़ा बहुत ऐसा मार्केट चलता है, उसके अकॉर्डिंग अपने को अपना सेटअप भी उस हिसाब से बनाना पड़ता है। अगर आप बुल मार्केट के सेटअप के हिसाब से भी ट्रेड करोगे तो आपको सिर्फ लॉस ही होएगा, प्रॉफिट नहीं होएगा। तो अपने को अभी थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा रखने का, और टारगेट भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करो। जो 5-6% मिल गया अपने को, लेके बैठ जाओ। और कोशिश करो कि लॉस जो है सबसे, चाहे वो आप कैश में ट्रेडिंग करते हो या फेनो ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो ओनली थिंग यू शुड बी फोकस ऑन कीपिंग लॉसेस स्मॉल। कैपिटल प्रोटेक्शन, मैंने कल एक ट्रेड लिया था रोटो पंप्स का। द स्टॉक्स हैड बल्क डील हुई थी उसमें, प्रमोटर्स ने शेयर बेचे थे, और कल जीएसटी भी पंप्स पे 12 से 18% हो गया था। तो मैंने सुबह 5-10 मिनट वेट किया, मेरे को देखा मैंने इस मोमेंटम है नहीं स्टॉक में, नेगेटिव न्यूज फ्लो है, इवन दो द चार्ट हैड अ वेरी सॉलिड ब्रेकआउट, बट आई चूज टू एग्जिट द स्टॉक। आई केप्ट दिस एसएल ऑन 4-5%। स्टॉप लॉस मैंने बहुत बड़ा नहीं रखा था, बट वो भी क्यों देना जब नेगेटिव न्यूज आ चुकी है। और आजकल का मार्केट ऐसा है कि अच्छे न्यूज पे स्टॉक चले ना चले, नेगेटिव पे गिरता जरूर है। तो ये चीजें थोड़ी दिमाग में रखना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड इज कैपिटल प्रोटेक्शन। तो लॉस छोटा रखो, और थोड़ा भी अगर डाउट हो, अगर आपका थोड़ा भी कन्विक्शन नहीं है किसी स्टॉक पे, तो एग्जिट मार जाओ। और कोशिश करो कि लिमिटेड होल्डिंग्स हो, लिमिटेड हाई कन्विक्शन स्टॉक से ट्रेड करो। और मार्केट जैसे जैसे थोड़ा वापस से मोमेंटम आता है, तो फिर आप थोड़ा बहुत रिस्क एपेटाइट अपना बढ़ा सकते हो। तो ये चीजें बस थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। राइट, ब्रिलियंट सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड स्पेशली द लाइन रिस्क औकात अनुसार होना चाहिए, आई गेस नमक स्वादानुसार और रिस्क औकात अनुसार जरूरी है इसमें। Yeah, राइट, this is the most सो important part. Why in the किरुबाकर सर, stock आई वुड market, in the stock market, the most important part is capital protection. लोग आते हैं 2 दिन में वापस झोली भर के आते हैं, झोली खाली करके चले जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मार्केट में, पैसा उसी का बनता है जो टिकता है, और टिकने के लिए पैसा चाहिए। तो पहले पैसा बचाओ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसा रहेगा तो ही ट्रेड कर पाओगे, पैसा नहीं रहेगा फिर ट्रेड नहीं हो पाएगा।
So that is the most important part. Absolutely, absolutely, sir. Kirubakaran sir, आपसे भी I would love to ask you the same question. Yes. How do you plan your exits? See, with respect to exit, so that as you correctly pointed out, it is not the entry that which matters. It is the exit which decides whether you're going to make profit or not. But no, the main concern that most of the people would suffer is like they do not know how much is too much. Say, suppose a particular stock is going down 80-90%. It is not the stock that is going 80-90% that matters. It is how much capital that you're putting into that stock decides whether you're going to hold that particular stock or not. For an example, if you have 10 lakhs of capital, and if you have put only just 1 lakh in a particular stock, and if that stock tanked 90%, still from your overall capital, you would have lost just 9% of your overall capital. So the allocation towards whatever the stocks that you're betting on is really important. And second thing is like, people, if it is, say, suppose if a stock moved 100% or 200% over 5 years or 10 years period, all these greatest investors like Warren Buffett, Charlie Munger, and all these people, it is not what they did with the 20, 30 years of the period in the markets that matters. How they behaved in just 18 months or no 20 months that during those bear market period. So on an average, the bull market period would last for 5 years, but the bear market would last only for 18 months approximately. So it is all about how you behave in this 18 months decides your overall fortune. So you don't need to be, a great investor for 20 years, 30 years. It is all about how you control your emotions in those 18 months. That is why, these people have, made so much of fortune in the markets because they were, able to hold those stocks during those 18 months of period, which all other people were, panicked and, lost it. And with respect to exit, no, there are companies like say Bajaj Finance moved up more than 90,000%, since listing, and companies like Titan has moved up more than 45,000% since listing. But similarly, like for every Bajaj, every Titan, we have companies like DHFL and S Bank, which is lost more than 99%. So it is really difficult to time the exit exactly at the top. Like nobody would have exited the S Bank or DHFL stock exactly at the top, but there are certain things which people could do it where personally like DHFL and S Bank, when I have invested, I came out the moment it crashed more than 40% in one single day. Because I still remember it happened in 2018 September, I guess, when the both the stock crashed. Across the media the news were flashing, and the first thing that most of the retail investors what they thought is, okay, the stock has crashed 40%, which means that it is currently available at a very cheaper price. Because back then the news was not out. The news about the loan scams and all these things were out only after many months. And by the time the news came out, actually the stock tanked much. So but when it lost more than 40%, instead of focusing on the fundamentals, because these companies crashing 40% is not a normal news. Any stocks can crash more than 40 or 50%, but companies like DHFL and S Bank, which is part of portfolio of multiple mutual funds, those companies going down abruptly in a 40% because they're part of FNO. And second thing, many fund houses were exiting those stocks. And there will be no smoke without fire. Obviously, these fund houses know something that retail investors do not know about. So obviously they exited it, but no, we retail investors thought that was available at an attractive price. So what really I did that, I came out of these stocks at the right time, because the moment it crashed more than 40%, I did a simple historical analysis, checking what are the list of stocks which has crashed more than 40% in one single day. Like check all the FNO stocks and find out what are the list of stocks that has crashed more than 40% in one single day, and check what happened to these stocks 2 years 3 years down the line. This is one simple approach I did. And you know what, the list of companies that came in the scanner was companies like Satyam Computers, companies like Core Education, companies like GTL Infra, Unitech. So all these companies came into the list which were part of FNO stocks that crashed more than 40% in just one day. And then when I looked into the historical chart of these companies, eventually 2 years, 3 years down the line, all these stocks were not traded as a penny stock. Eventually, it came back to a penny levels. So I concluded that these two stocks, it is better to exit. Even if I'm at a loss, it's better to exit at this price the moment it crashed 40%, because there is a high probability. It's not for sure, but historically there is a high probability that these two stocks could become a penny stock. So I wrote a detailed article in Quora back then,
and explain that this could be the news. But if you're waiting for news confirmation, then that would be really very delayed. News always comes later. Price always reacts first. For example, even if you consider Bajaj Finance, when the COVID struck, every newspaper wrote a detailed article stating that Bajaj Finance is going to suffer badly because of the NBFC loans that they have given out to multiple normal people, where Bajaj cannot retrieve those money back. It is really difficult for the loan recovery period because of no COVID crash. Obviously, because of economic shutdown, it would be really difficult for them for the loan recovery. So every news published completely negative about Bajaj Finance, and it crashed, and it went down towards 52-week low. But the moment it came back to recover all the losses, and then it starts moving up, the perspective completely changed. What the complete the news article was, it's all about, okay, it's now the COVID has struck, economy is very weak, but this is a time where people would really need more loans. So Bajaj Finance will be a beneficiary in this because they can disperse more loans because they have the large market share. So perspective keeps on changing. So if you really wait for the news to make your investing decision, then you are going to suffer a lot. So it's better. First thing is always size your positions accordingly so that if the stock is crashing, you're not losing much. And second thing, take your decisions based on historical data. Do not completely focus on the news. So that is what I wanted to convey. Right. Absolutely. Thank you so much for sharing that. That is an absolutely beautiful piece of conversation that we just had, sir. And I think this example that you just gave, there can be no better way to predict it, to kind of tell it. All right. So, okay, we have a few questions from our audiences as well. So before I continue with, I have a lot of questions. I could go on like all night long and keep asking you questions and learning from you. But I think our audience gets primacy, and that's why let's take up a few questions of theirs as well. Okay, just one second. एक क्वेश्चन हम लोगों को सुबह ही आया था which was to stock wizard sir. I'm sorry, Aditya sir. Sir, like it was around the data. Like what data do you generally refer to kind of get a sense of what is going to happen in the market or what is happening in the market? So how do you? What is your process for that? What data do you look at? It's a basic open interest which you can see during the market. You have different apps as well, different websites where you can see how the big players are positioning their bets in the market. So it's a basic open interest which you can आप आराम से किसी भी साइट या ऐप पे देख सकते हो कि अभी मार्केट में ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है, चाहे वो इंडेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में या स्टॉक्स में हो. यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट व्हाट द डेटा इज suggesting for the day. So it's simple overriding. That's it. Right. Awesome. Awesome. Okay. Next question is regarding manufacturing companies in future. Sorry, drone manufacturing companies with regards to Dynamatic Tech, Zen Technologies, and others. Drone manufacturing. So either of you, Kirubakaran sir, you kind of said you just go by your rules, and for investing you have a very specific selection. But in case you're tracking any drone companies, or Aditya sir, if you're tracking the drone manufacturing companies, any of these? No, man, I do not have any idea about this stuff. You have different companies listed. We have Paras Defense, Zentech, Ratan India, BEL. There are a lot of companies, but I prefer non-PSU's company. I don't have much trust in the PSU's company. So Zentech we have Paras Defense, Ratan India you have. So these are the companies you can bet on. For the fundamental aspects, you can check how the company is performing for the past few years. You can definitely Gentech. If what I remember, the company has received good orders in the past month. कुछ 6 महीने पहले उसको काफी अच्छा खासा ऑर्डर भी मिला था उसको. तो कुछ चीजों को आप कंसिडर कर सकते हो. बट मैं थोड़ा बहुत अवॉइड नॉन पीएसयूज कंपनी लाइक वी हैव बीएल, इनको थोड़ा अवॉइड करो और अच्छी कंपनी पे फोकस करो. अंडर वैल्यूड कोशिश करो कि मार्केट में इफ यू आर trying for investing purpose, always look for undervalued stock.
जिनमें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हो, उन पे फोकस करना चाहिए। तो अभी तो मैंने कोई ट्रैक रिसेंट कर नहीं रहा हूँ, बट हाँ जेंटेक को मेरे को 3 या 4 महीने पहले आई हर्ड सम न्यूज के company has got very good orders and the company is growing at a very good pace. Even Paras Defense as well, the companies looks good. रतन इंडिया भी फोकस में है, तो ये 2-3 कंपनियां you can definitely bet for, but try to avoid PSUs if you are looking for investment purpose. Right. Awesome. Awesome, sir. I think I do remember our conversation. We have had a detailed discussion on your view on PSU companies as well in the past. PSUs में थोड़ा सोच समझ के करना Right. चाहिए, और मतलब द चांसेस ऑफ द ग्रोथ इज वेरी मिनिमल। तो क्यों अपना बेट पैसे को ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हो, क्योंकि इट्स योर हार्ड अर्न मनी, यू शुड keep your money on the safe side. So try to avoid PSUs. Definitely some PSUs have performed very well, but the odds of winning bet on PSUs is very less. So if you are not into much fundamentals, if you अगर आपको कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह पढ़नी नहीं आती, अगर आपको बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं है, तो आप PSUs को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर किसी अगर कोई एडवाइजर आपको मिलता है, अगर वो सजेस्ट करता है तभी इन्वेस्ट करो, बट खुद से कोशिश करो कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो PSUs को अवॉइड ही किया करो, as per what's my limited experience tells. All right, awesome. Next, we have a few more stock specific questions. So, both of our experts tonight, if either of you is tracking these stocks, please help us. Vardhaman Textiles and AWL has been asked by Wasim Shah, sir. And Rate Gain and Poonawalla FinCorp for 4 to 6 months by Bharat, sir. So, either of these four stocks, if you track Kirubakaran, sir, or Aditya, sir. Poonawalla FinCorp had some good triggers. Even Dar Poonawalla, I guess, bought some stake in the company. Since then, the company is posting very solid results. अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो अभी तो कंपनी तो अच्छी है। और कौन सी कंपनी बोल रहे हो आप? One was Rate Gain. अच्छा, रेट गेन वेट अ सेक। रेट गेन में रिसेंटली ट्रैक नहीं कर रहा, बट पूना वाला में काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ है, और पूना वाला में ट्रिगर्स भी काफी अच्छे खासे हैं। कोई और स्टॉक रेट गेन की पूना वाला के अलावा? Yes, sir. Vardhaman Textiles and वर्धमान AWL. टेक्सटाइल भी अच्छी कंपनी है, और इसमें मुझे लगता है स्टॉक स्प्लिट की भी न्यूज थी कुछ महीने पहले, तो आई गेस स्टॉक अभी अच्छे वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल भी होगा। तो VTL इज गुड कंपनी, नो डाउट। एंड पूना वाला, यस, VTL में भी स्प्लिट हुआ है, बस टेलिंग, हाँ स्प्लिट ऑलरेडी, द स्टॉक में स्प्लिटिंग हुई है, आई गेस मार्च में हुआ है, और अभी स्टॉक्स काफी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है आपको, तो इसको आप कर सकते हो। आई वुड अगेन से कि यहाँ पे वी आर नॉट डिस्कसिंग रिकमेंडेशंस, बट VTL इज अवेलेबल एट वेरी गुड वैल्यूएशंस, एंड पूना वाला इज डेफिनेटली इम्प्रूविंग सिंस चेंज ऑफ द मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली दिस लुक्स attractive bet right now. Awesome. Thank you so much for that, sir. This has been amazing. I would, of course, I always thank our guests and our audiences every night. But Kirubakaran sir, especially a big thanks to you. So for our audiences tonight, Kirubakaran sir is generally, but he's an early sleeper and I think an early riser, so he's generally asleep by now. But on our request, he agreed to make time for us and delay sleeping time just for us. I can't really thank you enough. Please accept our apologies Sure, for no problem, keeping no you problem, up, no and problem. right. And of course, it was an amazing session, sir. I would love to have a one-on-one session as well from you. And your answers were so direct and so plain and such enlightening. They were absolutely amazing. Thank you so much for that, Kirubakaran sir. Thanks, thank you so much.
आदित्य सर, आपके साथ तो हमेशा बात करने में वो एक जो खुला अंदाज है आपका, वो एक अलग रहता ही है. So these are also like you give the most probably the brutally honest and to the point advice and help us learn that way. So it's always fun talking to you, sir. Actually, the So main I purpose really, of really thankful to you, sir. being on Twitter is to the least we can do for the society is share our knowledge. Whatever limited knowledge we have, we try to share. We want कि जो भी अपन को फॉलो करते हैं, जो भी दे फॉलो अस फॉर सम होप. जो भी अपन को फॉलो करते हैं ट्विटर पे, और वी आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बनती है कि एटलीस्ट ट्राई टू कंट्रीब्यूट वट एवर वी कैन. So whenever I give time, whenever you guys जब भी आप लोग इनवाइट करते हो, तो I try के थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाऊँ. तो yeah, it's I definitely would love to join you again and share whatever limited knowledge I have. Thank you so much for that, sir. And of course, our audience, thank you so much for being there with us and sticking with us all throughout the hour. We have, I think throughout the hour, we had over 200 listeners. So that's amazing. And hats off to both of you, our experts tonight. I think it's all thanks to your knowledge that you're sharing with us today that we had such a beautiful audience. That's all for tonight. Thank you so much, everybody. Have a profitable day tomorrow and a really good night. Yeah, Bye-bye. thanks to all who joined tonight. Thanks for joining. Good night. Yeah, thanks, guys.